this is all about solving a problem with a design. So that design can be a structure diagram or a flowchart or a pseudocode or a simple English structure algorithm. First, we have to understand a point like a computer system or device which performs a task or solves a given problem. The task or problem has to be clearly defined, showing what is going to do computed and how it is going to be computed. Right. So computing needs instruction, and without those instructions, it cannot follow anything. Remember when I बताया था, it is a dead thing. We have to make him a living. How? By giving him instruction, storing data inside him. Then he's going to perform whatever task he is required. But there's another thing. All the instructions are going to be executed one by one in a sequence. Without that sequence, it's not going to understand what is required at that task. Computer system is made up of software, data, hardware, communications, and people. So why people? Because he's the one who's going to operate the system, and he is the one who has created the system or software or hardware. Now, each computer system can be divided into a set of subsystems. Now, what is a subsystem? Subsystem is actually a simple division of a system which is your main system. So suppose कोई भी मेरा एक main system है, इसको अगर हम different parts के अंदर divide करें, right? So that will become, this will become its subsystem. Example मैं कहता हूँ, like operating system when you use Windows. Now Windows is what? It is your main system. This is your main system. लेकिन Windows के अंदर आप किसी प्रोग्रामिंग ऑप्शन में जाते हो, या आप एंटरटेनमेंट में जाते हो, या गेम्स में जाते हो. Now these are their subsystem. This is also its Windows subsystem. इसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग जब करते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर इट्स नॉट अ कंप्लीट मेन प्रोग्राम. Programs are divided in different sub programs. Okay? This is your main program, and this main program is divided in sub programs. Subprogram 1, subprogram 2, subprogram 3, and so on. अब इसमें क्या फायदा क्या होता है? वो एक डेवलपर है और हम कोई गेम डेवलप करना चाह रहे हैं, तो डेवलपर सिर्फ क्या कर रहा है? कोडिंग का काम कर रहा है, गेम कोडिंग. नाउ देयर इज अ ग्राफिकल डिजाइनर जो कि सिर्फ ग्राफिक्स के ऊपर काम करेगा. ठीक है, उसके लिए अलग वो सिस्टम और मॉड्यूल और यू कैन से सब सिस्टम क्रिएट करेगा, सब प्रोग्रामिंग क्रिएट करेगा. एंड देयर इज अ सिक्योरिटी जो कि सिक्योरिटी की चीजों को मेंटेन कर रहा है, वो उसके ऊपर करेगा. एक गेम एक बंदा नहीं डेवलप कर रहा, देयर इज अ टीम हु इज डेवलपिंग अ गेम. तो डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट चीजों को एक्चुअली क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं और एक मेन प्रोग्राम के अंदर उसको मर्ज कर रहे हैं. राइट. सो प्रोग्रामिंग में भी हम ये कुछ चीजें देखेंगे जिसको हम मॉड्यूल्स कहते हैं, एंड इन मॉड्यूल वी विल सी द प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस प्रोसेस. राइट. नाउ this is the concept of subsystem. Now if we go with the further statement, these subsystems can be divided into subsystems and so on until each system just performs a single action. Now let's take an example. A computer system can be a very large or very small or any size in between. Most people interact with many different computer systems during their daily life without realizing it. For example, when I wake up in the morning, I use an app, my smartphone, for my alarm. I then check weather forecast on my computer before I drive to work. This alarm program is a very small computer. When I check the weather forecast, I obtain the information from one of the largest computer system in the world. और वो कौन है? आपका जिसके पास फोरकास्ट डिटेल्स है, वो किसी ना किसी सर्वर पे होगा. अब वो सर्वर हमारा मोस्टली या गूगल से मिल रहा होता है, गूगल वेदर सर्वर से मिल रहा होता है, और वो फर्दर हमारे मोबाइल पे डिस्प्ले करवा रहा होता है. ठीक है. अब जिस भी रीजन में जाते हो उसके अकॉर्डिंगली वो आपके वेदर फोरकास्ट है. नाउ दिस इज योर मेन सिस्टम. और मेन सिस्टम से अब क्या, दिस इज माय जस्ट मोबाइल, और मेरे मोबाइल में क्या डिफरेंट
शो करवा रहा है रीजन के अकॉर्डिंग, राइट? दिस इज वन एग्जांपल। अब अगर हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल इज माय मेन डिवाइस, और इस मेन डिवाइस में मेरे पास डिफरेंट एप्स हैं। इन डिफरेंट एप्स के अंदर आई click want to check my weather, so I will go with weather option. Now this is what? This is its subsystem. ठीक है, उसी की सबसिस्टम या सब प्रोग्रामिंग पे आप फर्दर ऑन आप जा सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सिलेबस बुक। अगर हम सिलेबस बुक की बात करें, सबसिस्टम, अगर मैं इफ आई शो यू अ कंप्लीट बुक, मैं कहता हूँ यार ये आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक है और इस बुक में सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप पहले तो बुक, इतनी बड़ी बुक, हेल्दी बुक देखोगे तो यू से ओ इतनी बड़ी बुक है, ये पढ़ेगा कौन, याद कौन करे, हाउ आई कैन मेमोराइज इट, it's so difficult to read 1,000 2,000 pages book. But if I create them in chapter wise, chapter 1, chapter 2, chapter 3, और मेन कंटेंट में मैं आपके यहाँ पे कंटेंट के अंदर शो करवाता हूँ, दिस इज चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है? तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। अच्छा यार, अच्छा ठीक है, दैट्स फाइन, इसमें चैप्टर आई विच चैप्टर आई वांट टू डू आई कैन डायरेक्टली गो टू दैट चैप्टर, सो इट मेक अस इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है? सो इन आवर कंप्यूटर सिलेबस, अगर हम गो विद दैट, वी हैव थ्योरी एंड problem solving design. This is paper 1, P1 and P2, but it is a part of your main subject. This is your main system. Now this will become its subsystem, right? And this will become its subsystem. This is going to be level 1 of your main program. अगर theory में, if we go in theory और उसके अंदर हम देखें, we will see further subsystems में data representation, communication, hardware security, ethics. But if you go with data representation, we will see further details in it. So if I directly want to go to hexadecimal, what will I do? I will directly open theory, go to data representation and directly go to hexadecimal, right? So this is the concept of a program. अब इसमें इतनी ज्यादा रिसोर्स आपके पास पड़ा हो, बुक आपके पास बुक अवेलेबल हो, आपने किसी भी पार्ट ऑफ द बुक और किसी भी सिस्टम या सब सिस्टम को यूज करना है, ठीक है? इफ आई वांट टू गो टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आई नो वेयर आई हैव टू गो। मैं मेन डेस्कटॉप पे आऊंगा, थ्योरी आइकॉन पे आऊंगा, इन थ्योरी आई विल गो टू हार्डवेयर एंड सिक्योरिटी ऑप्शन, और हार्डवेयर सिक्योरिटी के अंदर आई विल हैव दीज ऑप्शन 1 2 3 एंड सो ऑन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं डायरेक्टली वहां पे जा सकता हूँ। This is the concept. So this is going to be level 1, this is going to be its level 2, this is going to be further levels, level 3, level 4, and it's going to be level 5. Getting this? समझ आ रही है सिस्टम, मेन सिस्टम प्रोग्राम्स की? Yes, sir. How the system is actually, computer is working. It's not a complete एक device या एक coding नहीं है. There are chunks of different codings, programming, और उनको एक merge करके उनको टेस्ट करके एग्जीक्यूट किया। Now if you look into this subsystem, ये जो subsystem का flow अगर आप देखो, it is coming from top to Bottom. Yes, exactly. So mostly जो hierarchy of system या subsystem की होगी, it will be from top to bottom. Now, top to bottom design is breaking down a system into smaller subsystem and breaking these subsystems down into smaller subsystems until each subsystem perform one task. यही हुआ ना, ठीक है? Computer science is divided into this subsystem, then theory is divided in this subsystem, or her subsystem has their own performance. Now, this is a method of breaking down a problem to smaller problems. This is an effective way of designing a computer system to provide a solution to a problem, since each part of the problem is broken down into smaller, more manageable problems. When we'll go with the modules, modules or functions and procedures पे काम करेंगे, in coding and pseudocode, you will see this concept कि what is a system और subsystem क्या है, main program क्या, और main program में आप कौन से subsystems use कर रहे हो. Another example,
we did built-in functions. हमने built-in functions किया था, right? Yes, sir. अब क्या हो रहा था? This is my main program, और main program का code was there. मैं if I use an int function और उसको int function को call कर रहा हूँ, this is a subsystem. ये एक सब प्रोग्राम कह सकते हो, ठीक है? और यू कैन से सब रूटीन भी होता है, वो हम आगे देखेंगे. ये क्या हो रहा है? इट इज अवेलेबल इन योर लाइब्रेरी. आपकी प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी में ये कोड अवेलेबल है. जस्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी कॉलिंग इट्स नेम, और वो आगे फर्दर प्रोग्राम कर रहा है. हमें इसका पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं इन फंक्शन की. तो व्हाई? बिकॉज इट्स अवेलेबल देयर, हम डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं. बट फर्दर in our syllabus we are going to create its functions and procedures, और उनको सेव करेंगे और उनके नेम्स को सिर्फ कॉल करके हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. इनका कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे. This process of breaking down in smaller subsystem is called stepwise refinement. This is very important. Stepwise refinement. What is that? It is a top-down design breaking a main program into sub programs or subsystems. ठीक है? तो यहाँ पे देखें, दिस इज अ स्टेप वाइज रिफाइनमेंट हुई है ना आपकी. एक मेन सिलेबस को आपने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ. Now, when large computer systems are being developed, this means that several programmers can work independently to develop and test different subsystems for the same system at the same time. But just I told you this. This also reduces the development and testing time. Okay? Structure diagrams are used to represent top-down design in an hierarchy form. The structure diagram shows the design of a computer system in a hierarchy way, with each level giving a more detailed breakdown of the system into subsystems. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. Suppose an alarm system आपका क्या है? It's an app. आप अपने मोबाइल में जाते हो और मोबाइल में आप अलार्म का ऐप क्लिक कर देते हो. Now, an alarm could be divided into 3 subsystems: testing alarm, setting the alarm, checking the alarm time, sounding the alarm. तो हमारे पास अगर आप मोबाइल में तो और भी होगी ऑप्शंस आती हैं. जैसे ही आप उस ऐप को ऑन करते हो, आपको इतनी ज्यादा लिस्ट ऑफ डिटेल्स आ जाती है. तो मैंने आपको सिर्फ आई एम टेलिंग अबाउट 3 मेजर. Now, these subsystem code then be further subdivided. The structure diagram make the process clear. अब suppose this is your alarm. अलार्म ऐप में आपके पास क्या हुआ? सेट अलार्म, चेक टाइम एंड साउंड अलार्म. अब सेट टाइम के अंदर फर्दर आपकी ब्रेकडाउन है. सेट टाइम कर दें या टर्न अलार्म ऑन ऑफ कर दें. साउंड अलार्म में आप प्ले साउंड फॉर 2 मिनट्स कर सकते हो, check off snooze and reset or clear alarm कर सकते हो. Now what is it? This is your main program. This is your sub program, or you can say subsystem, or this is your main system. This is your subsystem. Okay, this is subsystem 1, and this is subsystem 2, and this is subsystem 3. ठीक है, ये तीनों आपके systems हैं. Further, subsystem 1 का this is divided into further subsystem. So this is the subsystem of this subsystem 1. You can say subsystem 1-1, or you can say subsystem 1-2. ठीक है, आप इनको फर्दर नाम दे सकते हो. ये तो इसे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए नाम दे रहा हूँ, मैं पूरा नेम नहीं लिख रहा. अदरवाइज सबसिस्टम, ठीक है, सबसिस्टम 1. तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, राइट? ओके, अब मुझे टर्न ऑफ अलार्म करना है. व्हाट विल आई डू? गो ओवर हियर, गो इनसाइड सेट अलार्म एंड टर्न अलार्म ऑन ऑफ, राइट? सो हम एप्स के अंदर इसी तरह ऑपरेट कर रहे हो. नाउ दिस डायग्राम, अगर आप इस डायग्राम को देखें, इट इज शोइंग जस्ट अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगुलर के फर्दर डिवीजन है, ऐसे ही. Yes, sir. This is a structure diagram. So when you are creating a structure diagram, we have to just use a rectangular shape, और उनके बाद हम further उसको hierarchy के अंदर, this is a hierarchy. So this is level 1, this is level 2, this is level 3. ठीक है, so in this hierarchy you can follow.
क्या मैं डायरेक्टली प्ले साउंड फॉर 2 मिनट्स में जा सकता हूँ विदाउट गोइंग इन ऐप? वी कैन नॉट, No, sir. बिकॉज वी हैव टू फर्स्ट क्लिक ओवर हियर, गो टू साउंड अलार्म, देन आई, दिस इज कि ना, ये मैं अगर फॉलो नहीं करूंगा तो मैं कैसे जाऊंगा? जस्ट लाइक if you are in a school and you have principal, you have vice principal, then you have coordinator, then you have teacher, then you have students. Okay, this is the flow. This, and this. Now you want to get an application, you want to have a leave application आपने submit करवानी, तो आप किसको करवाओगे? डायरेक्ट प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को, कोऑर्डिनेटर को, या टीचर, योर क्लास टीचर? Teacher, sir. टीचर, एग्जैक्टली। डायरेक्टली आप क्या प्रिंसिपल को दे सकते हो? No, sir. सेम विद वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्किंग एनवायरनमेंट में अगर आपने बॉस या सीईओ से बात करनी है, तो आप अपने एज एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर मैं हूँ, तो मैं अपने फर्दर अपर लेवल जो भी होंगे, ठीक है, उनसे मैं बात करूंगा, और वो फिर डायरेक्टर है, वाइस डायरेक्टर एंड सो ऑन, तो मैं उनसे पहले बात करूंगा, देन आई हैव अ कॉन्टेक्ट विद द सीईओ। और डायरेक्टली सीईओ के पास नहीं जा सकते। So there is a hierarchy which needs to be followed. Same with computer, step by step in a sequence. If this sequence is not followed, you will have a problem in your program, or you will generate an error. ठीक है? So we have tested programming. हमने programming में concept किया हो, लेकिन इसका मकसद दिखाने का क्या है? When we are working with documentation, डॉक्यूमेंटेशन में हमें स्ट्रक्चर डायग्राम, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट के ऊपर काम करना हो। सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन फॉर गिवन टास्क दैट forms a subsystem, not the whole system. Subroutines written in high level languages like Python, C++, Java, and further. They are known as high level languages, जो easy to understand होते हैं, are called procedures or functions depending on how they are used. ठीक है, so procedures and functions, जैसे अभी मैंने आपको बताया, these are your functions, ये functions है, मैं direct इन functions को call करके use कर सकता हूँ. So our library routines can have procedures. Library routines जो built-in functions आपके use होते हैं, a set of programming structures for a given task that is already available for you in function. ठीक है, हमने ये ऑलरेडी कर लिया हुआ है, ठीक है, इसमें लेफ्ट फंक्शन, ठीक है, these are built-in functions जो आपकी लाइब्रेरी में मौजूद है. So it is easy for programmers to directly just use these library routines and work on that. Now these library routines are also your subsystem. ठीक है, तो ये भी आपके subsystems ही कहलाते हैं. It is a pre-tested and usually perform a task that is frequently required. For example, the task get time in the checking for the alarm. Time algorithm would probably be readily available at the library. अवेलेबल होगा, डायरेक्टली आपको कॉल बनाने का जरूरत नहीं है, उसको पूरा कोड आप डायरेक्टली उसे कर सकते हो. That's all for now. Enjoy learning. Like, subscribe, share. Allah Hafiz.